Hello there, everybody. Welcome back. Welcome back. Today we're going to be watching and reacting to another Career 247 video. PD10 everyone to get maximum discount. Always got to say that. Make sure that his discount code is getting recognition here. Anyways, we're going to be watching and reacting to, I suppose, the Indian perspective on the recent Israel-Iran situation. I gotta watch my words for the first little bit, otherwise YouTube will get mad at me. But yeah, anyways, Israel bombs Iran's nuclear sites. War has started, ladies and gentlemen. War has started. So I did cover this when it first went down, when it first happened. I shot up a quick little live stream and went over a lot of what was going on. They targeted a bunch of nuclear sites. They targeted a bunch of high profile individuals in the Iran administration, be that high in the government, high in the military, and high as in like scientists. They specifically targeted these people out. Kind of wild stuff. Kind of wild stuff. So let's go ahead and watch this. The link to this video will be in the description down below, so please go and check it out. And yeah, let's get it started. नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। इजराइल ने एक मैसिव अटैक लॉन्च कर दिया है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, इनके कैपिटल पर और वेरियस और लोकेशंस पर। यह बात बेंजामिन नेतन्याहू ने आज सुबह खुद दुनिया को I love YouTube's translation of Netanyahu. बताई है कि इजराइल ने एक प्रीएम्प्टिव अटैक लॉन्च कर दिया है ईरान पर, क्योंकि इजराइल के हिसाब से ईरान न्यूक्लियर वेपन्स के बहुत ज्यादा करीब था और अब ईरान को रुकने के लिए यह करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। Yeah, Israel had come out and said that Iran was within days of developing a nuclear weapon, and they had potentially the capability to create 15 nuclear payloads, which is pretty bad. It's pretty bad. So Israel attacked the nuclear facilities. They attacked the ballistic missile facilities, as well as a few air bases. जो तीव्रता है इस अटैक की, इससे बताया जा रहा है ईरान बहुत ही जल्द फुल स्केल वॉर डिक्लेयर कर देगा। और जो विजुअल्स हैं यहाँ पर, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया को कैसे बताया है कि ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, जी हाँ, जिस तरीके से भारत ने लॉन्च किया है ऑपरेशन सिंदूर, इजराइल के ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। हालांकि मैं ये कहूंगा इजराइल का ऑपरेशन काफी अलग है। क्यों अलग है बताऊंगा, बट सबसे पहले ये छोटी सी क्लिप देखिए। ये है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये। And it is a threat. It is a threat because if we look at it, the Islamic regime of Iran, because that's what it is, the current administration, the current government over Iran is a very Islamic focused regime. They supply munitions and support to a lot of Islamist extremist groups, Hezbollah, Hamas, Houthis, to name a few, just a few. So it is very vital and important to keep them in check. अपने आप में इजराइल के एग्जिस्टेंस का सवाल था। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाते तो इजराइल का एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाता। और जो ये ऑपरेशन है राइजिंग लॉयन, ये कई दिनों तक चलेगा। कितने दिन? जितने दिन लगे उतने दिन तक चलेगा। इनके सारी न्यूक्लियर साइट्स, इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट, बेसिकली इजराइल ईरान पर इतनी स्ट्राइक्स करेगा कि ईरान कभी भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंप्लीट ना कर पाए। इजराइल ने अपने राइजिंग लॉयन ऑपरेशन में ना जो शुरुआत करी है, ये शॉकिंग है। पहले ही अटैक में इन्होंने हुसैन सलामी को मार दिया। ये ईरान का ऑफिसर था जो कमांडर इन चीफ था इनकी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का। ये ईरान की सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है। पहले ही अटैक में कमांडर इन चीफ मार दिया उनका। उसके अलावा इनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है उनको मार दिया। बताया जा रहा है ईरान के जो चीफ ऑफ स्टाफ है ऑफ द आर्म फोर्सेस, उनको भी मार दिया है। ये कुछ ऐसे ही है कि मान लो ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन ना हम आसिम मुनीर को मार देते। जहां पे आसिम मुनीर रहता है एक ब्रह्मोस, वहां पर फिर एक ब्रह्मोस जहां पे DGISPR और जो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी औरंगजेब वगैरह वो सब बैठे थे, वहां पर कुछ और लोग। It was the center of gravity. It's all over social media, guys. The power of the center of gravity for our failed marshal. लोकेशंस पर, मतलब आपको अगर समझना है ना कि ईरान पर जो ये अटैक हुआ है इजराइल का, ये कितना तीव्र है, कुछ हद तक कंपैरिजन ऐसा ही करना पड़ेगा। और तब भी कंपैरिजन कम पड़ जाता है। एक थ्योरी ये कहती है कि इंडिया ने गलती से कुछ पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पे भी अटैक कर दिया था। इजराइल ने तो इंटेंशनली
जहां पर ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट कर रहा था, सीधा वहां पे अटैक किया है। ये इधर आप देख पाओगे मैप में, ये ईरान में जो आपको ये शहर दिख रहा है, थोड़ा मैं आपके लिए जूम इन करता हूं। ये ईरान की राजधानी है, यहाँ पर तेहरान। यहाँ पे अटैक किया गया है। जो इनके रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का कमांडर था, इनका चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस था, ये दोनों यहीं पर मरे हैं। तेहरान के नीचे साउथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है नतांज के नाम से। ये आप देख पाओगे यहाँ पर, ये ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट साइट्स है। इधर अपने सेंट्रीफ्यूजेस रखते हैं ये लोग। इस साइट को बताया जा रहा है इजराइल ने मल्टीपल टाइम्स हिट किया है। जो एक्चुअल डैमेज है ग्राउंड लेवल पर, ये कुछ समय बाद पता लगेगा। और इस सब के अलावा कई जगह ईरान के जो मिसाइल स्टोर थे, The Iranian government has come out and said that these facilities have been completely destroyed. Now, I don't know if that's a ploy to trick people into thinking that they were actually destroyed or if they actually were indeed completely destroyed. I guess time will tell. वहां पे अटैक किया गया है। कई जगह ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम थे, प्राइमरली S-300, जी हाँ, जिस तरीके से भारत के पास S-400 है, S-300 यूज करता है ईरान। S-400 का एक प्रीडिसेसर है, काफी कमजोर है कंपेयर टू S-400। S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की रेंज 100 से 150 किलोमीटर के आसपास की है, और साथ ही साथ जो हाई एंड मिसाइल्स हैं, एडवांस मिसाइल्स, उनको ये रोक नहीं पाता। और बताया जा रहा है इसराइल ने ईरान के जो मिसाइल डिफेंस है वो भी कई जगह डिस्ट्रॉय कर दिए। और ये वीडियो इन पर्टिकुलर सोशल मीडिया पे बहुत Yeah, वायरल I हो गई didn't थी। even think about that. I didn't even think about that. Like this attack completely bypassed any air defense whatsoever. If they're able to do such major surgical strikes, that means Iran's air defense was inconsequential. थी ईरान की। यहाँ पे आप देख पाओगे, कमाल की वीडियो है। अब यहाँ पे हो सकता है कि आप कहें कि मगर ये हो क्या रहा है, ये कॉन्स्टेंटली इतने सारे Those are एक्सप्लोजन और कोई मिसाइल भी नहीं गिर रहा munitions ऊपर से, going ये क्या off. हो रहा है? देखिए, यहाँ पे ऊपर से मिसाइल नहीं गिरा। बताया जा रहा है कि मोसाद के जो एजेंट्स हैं, उनके कई लोग हैं ईरान के अंदर ग्राउंड लेवल पर। इन लोगों ने भी जैसे ही इजराइल की एयरफोर्स ने ऊपर से अटैक किया, एयर टू ग्राउंड अटैक किया, साथ ही साथ ग्राउंड पर जो मोसाद के एजेंट्स थे ईरान में, ये एक्टिवेट हो गए। और इन लोगों ने कई जो इनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स की साइट थी, ईरान की जो साइट थी जहां पर ये मिसाइल स्टोर करते हैं, उधर एक्सप्लोजन करवा दिया। और उसका नतीजा यहाँ पे आप देख रहे हैं, कांस्टेंट एक्सप्लोजन, एक के बाद एक। जो आवाज सुन रहे हैं, ये ईरान के मिसाइल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में। और एक इतना बड़ा अटैक करने के बाद, आई मीन दिस इज वॉर। आप कहीं Well, से भी yeah. ये मत समझ लेना कि पिछली बार की तरह जी ईरान ने कुछ अटैक किया इजराइल पर, इजराइल ने अटैक किया ईरान पर, फिर दोनों ठंडे होकर बैठ गए। नहीं, दिस इज प्रॉपर डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। अब बात यहाँ पर रुकेगी नहीं। ईरान और इसकी जो भी प्रॉक्सीज हैं, ये सब कुछ करेंगे इजराइल को डैमेज करने के लिए। और इजराइल ने All I'm going to say on this is that I prefer Iran's old flag from before 1979. पूरी दुनिया से एक सवाल पूछा है एक वीडियो में। जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं, इन लोगों ने 25 सेकंड की एक वीडियो अपलोड करी और दुनिया को ये कहा कि इतिहास आपको देख रहा है, अब पूरी दुनिया को डिसाइड करना होगा। इसमें सभी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, चाहे चाइना हो, इंडिया हो, यूएस, जापान, प्रीटी मच एवरीवन, यूरोपियन यूनियन, एवरीवन, कि आप ऐसे टाइम में किसके साथ खड़े होंगे। ये जो 25 सेकंड की क्लिप है, ये देखिए। History is watching. What side do you want to be on? The one who's fighting for your future, or the one who's doing everything to make sure you don't have one? Decide before it's too late. डिसाइड बिफोर इट्स टू लेट, ये इजराइल का मैसेज है पूरी दुनिया को। और यूएस ने अभी के लिए डिसाइड कर लिया है कि भैया हमको इस सब में नहीं पड़ना। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स कुछ लोग मुझसे यहाँ पर यही पूछेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में, मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कि यूएस का इंटरेस्ट था कि ऑपरेशन सिंदूर थम जाए, इंडिया पाकिस्तान के सारे एयर बेसेस डिस्ट्रॉय ना कर दे बुरी तरीके से, क्योंकि I was against the U.S. getting involved in this, by the way. I mean, if all of you have watched enough, that I'm so upset that the U.S. decided to stick their nose into this, and Trump's an idiot when it comes to him saying, "Oh, he brokered a peace deal," and yada yada yada. कल को हो सकता है कि यूएस एयरफोर्स ये एयर बेसेस यूज करे अगेंस्ट ईरान। आप सबको याद होगा, मैंने ये बात वीडियो में आपको बताई थी। ये 4 हफ्ते पुरानी मेरी वीडियो है, न्यूक्लियर वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान स्टॉप्ड बाय ट्रम्प। ये ट्रम्प का जो क्लेम था इनिशियली, उस पर मैंने बनाई थी। और ये वाला जो पार्ट है, ये सुनिएगा। नाउ यूएसए को डर ये था कि इंडिया रनवेज डिस्ट्रॉय कर रहा है पाकिस्तान के एयर बेसिस के, और यूएस मिलिट्री ने जो एक इवेंचुअल प्लान बना रखा है ईरान के साथ वॉर का। अभी ये वॉर मैं ये नहीं कह रहा स्टार्ट होने वाली है, उल्टा रिसेंटली ट्रंप ने नेतन्याहू को लताड़ भी लगा दी थी कि ये बार बार ईरान के साथ वॉर करना चाहते हैं, और काफी इजराइल को इन्होंने झटके भी दिए हैं। बट यूएस मिलिट्री ने कहीं पर एक प्लान भी बना रखा है कि कल को ईरान के साथ वॉर होगी तो ये क्या क्या करेंगे। उस प्लान में यूएस मिलिट्री को यकीन है कि ये पाकिस्तान के एयर बेसेस यूज कर रहे होंगे, जो पाकिस्तान की एयर स्ट्रिप्स हैं वगैरह,
वो कहीं ना कहीं यूएसए के काम आई। Now, ये बात जो मैंने आज से 4-5 हफ्ते पहले बोली थी, आज के समय आप देखोगे कई न्यूज आर्टिकल्स में ये बात मेंशन की जा रही है। फॉर एग्जांपल इधर आप देख पाओगे, पाकिस्तान पोजीशन ड्यूरिंग ए यूएस बैक्ड और इजरायली बैक्ड स्ट्राइक ऑन ईरान वुड मैटर immensely. The US may be seeking to ensure that Pakistan offers covert help such as use of its military bases and assets during a wider regional conflagration that could involve Iranian proxies in the Middle East. तो आप लोग समझ सकते हैं, देखिए यूएसए बहुत चिंतित था पाकिस्तान के एयर बेसिस को लेकर। अब ये बात अब The U.S. should stop pussyfooting around. If they want to use these Pakistani air bases, the U.S. should just go in there, get rid of the current government of Pakistan, sweep through, get rid of all the terrorist camps, and just make it do what the world is seeing what they're doing with Pakistan. Just make it like a its own little proxy nation, completely separate from the current government of Pakistan. It only makes sense to. It only makes sense to. The world keeps funneling all this money for decades into Pakistan, and it just gets all shit out the drain. It doesn't make sense. It really doesn't make sense. ओपनली डिस्कस की जा रही है। यूएसए के डिफेंस एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि बिल्कुल इंडिया जिस तरीके से करके डिस्ट्रॉय कर रहा था पाकिस्तान के एयर बेसेस, सडनली वॉशिंगटन डीसी में अलार्म बेल्स बजनी शुरू हो गई कि हमारा जो अभी एक बड़ी वॉर हमारी पेंडिंग है उसमें हम क्या करेंगे। Yeah, Marco Rubio, even Trump both came out and said that the U.S. had no involvement in Israel's decision to attack, although it was probably known ahead of time. I couldn't find the clip earlier, but there was a very coy clip of Trump. A reporter was asking him as he was stepping into a car if what he thought about rising tensions between Israel and Iran, and Trump made like this little coy clip about he said something along the lines of, "Oh, just watch and see." So I don't know. से मुनीर I don't know, को बचने का guys. बहाना मिल जाएगा कि मैं क्या करूं, इंडिया ने तो हमारे एयर बेसेस डिस्ट्रॉय कर दिए, अब मैं तुम लोगों की हेल्प कैसे कर पाऊंगा। तो यूएस देखिए पाकिस्तान पर प्रेशर डालेगा। पाकिस्तान अगर यहां पे मान लीजिए यूएसए के सपोर्ट में इमीडिएटली नहीं आया, तो जो आसिम मुनीर को ये बुलाने की बातचीत चल रही है यूएस के परेड वगैरह में, ये कैंसिल कर देंगे, बोल देंगे कि जी फेक न्यूज़ है, कुछ नहीं, हमने आसिम मुनीर को कभी इनवाइट नहीं किया था। No, और उसके they won't cancel the parade. अलावा हो सकता है, अगेन देखिए यूएस वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज। पाकिस्तान के जो लोन अप्रूव हुए थे आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, उसमें भी साइलेंट राइडर्स लगा देंगे कि ये पैसा कैसे खर्च सकते हो। देखिए मैं आपको साफ साफ बता दूं, अभी बीच में ना लोग काफी इंडिया में चिंतित हो गए थे देखकर कि जी बिलियंस ऑफ डॉलर्स ये वर्ल्ड बैंक के जाएंगे पाकिस्तान को और ये इतने बिलियन जाएंगे। मैं आपको साफ साफ बता दूं, इस दुनिया में फ्री में कोई किसी की हेल्प नहीं करता। देयर इज नो फ्री लंच। अगर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लोन सडनली पाकिस्तान को मिल रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में यूएस इतना ज्यादा खुद ही ये लोग क्लेम करते हैं कि इन्वॉल्व होकर ये कोशिश कर रहे थे कि बस पाकिस्तान को और डैमेज मत करो, बस अब इतना हो गया। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यूएस का सेल्फ इंटरेस्ट है। ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप तो ये चाहते थे कि इजराइल ये अटैक करे ही ना। मैंने मार्को रूबियो, जो यूएसए के आज के समय आप कह लीजिए विदेश मंत्री हैं, इनकी स्टेटमेंट देखिए। उन्होंने ये कहा है आज रात को इजराइल ने यूनिलैटरल एक्शन लिया है ईरान के अगेंस्ट, हम इस स्ट्राइक में इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पे पहली बात तो यूएस ईरान को ये कह रहा है, देखो जो भी अटैक किया है इजराइल ने किया है, हमने नहीं किया, हमको टारगेट मत करना। जो हमारे बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया में, यूएई में, कतर में, उनको टारगेट मत करना। और मैं वैसे ये भी बता दूं, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट लार्ज स्केल पर हो गई, जो लग रहा है हो ही जाएगी, सरप्राइज मत होना कि जिन इंडियंस ने यूएई या फिर यहाँ पे गल्फ में करोड़ों के मकान परचेज किए हैं, इनके गोल्डन कार्ड, गोल्डन वीजा लिए हैं, भागकर वापस भारत में आए सेफ्टी के लिए। क्योंकि ईरान जब डिसाइड कर लेगा कि अब ठीक है, अब आर या पार की बात है, अब तो सीधा सीधा यही है कि या तो हम लड़ेंगे या फिर एवरीथिंग विल एंड। तो उस केस में पूरे रीजन पर इसका इंपैक्ट आएगा ना। भारत पे इसका क्या इंपैक्ट होगा ये अलग से The whole region is going to go into turmoil. The whole region is, guys. It's not going to end with this. It really isn't. Even if they don't strike back right away, there's no way that the Iranian government will sit down and just let this happen. It's going to be a long summer. It's going to be a very, very, very long summer. आपको बताना होगा मुझे, बट अभी के लिए हमने ये डिस्कस कर लिया है कि इजराइल ने बड़ा अटैक कर दिया है ईरान पर। ईरान का जो अभी रिस्पॉन्स है देखना होगा ये क्या कहते हैं, और उसी के बेसिस पे हम बता देंगे क्या इस पार्ट में, दुनिया के इस हिस्से में एक बड़ी वॉर शुरू होने वाली है या नहीं। कुछ अपडेट्स आती हैं तो ऑब्वियसली मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए कभी किसी ऐसी वेबसाइट पे जाइएगा जहां पर PD10, everyone. Use code PD10. Use code PD10. All right. Let's read some of these comments, yeah? Failed Marshall Center of Gravity.
This doesn't translate. Okay. Dear Indians, greeting from Israel. I don't know what he said because I don't know Hindi, but this is a very important time. Your vocal support is all we need. Support Israel as much as possible. Let's make Iran Persia again. All right. Sure. I mean, why not, right? Sir's sense of humor, love from South India, love from Odisha. Actually, yeah, let's do a quick refresher here on the top comments. Will that translate yet? No, it doesn't translate. Okay. That's fine. List of targets. Oh yeah, there's a list of the specific targets that these are the specific individuals that were targeted. I also no, I don't have it saved here, but there is also an extensive list of actual bases that were targeted as well. I'm sure we'll find out more. There'll be more. There'll be more in the coming days, I'm sure. It's going to be a long weekend into a very, very, very long summer. Yes, the airplane crash was tragic. I talked about that as well. It's not a war. That's how Middle East countries communicate with each other. Bombs. All right. Pray for families who lost their lives. If Israel does anything to Iran, it is okay for the USA. If India did anything to Pakistan, it's not okay for the USA. What hypocrisy. Center of gravity never gets old. I say to all Indians who went for a job, be safe and follow the guidelines of Indian Embassy in Israel. Operation Sindoor is not over yet. It's just paused. It starts back up today, right? By launching Operation Rising Lion, Israel proved that it's a real lion in today's multipolar world. Poor Iran lost all leaders, even nuclear leaders. I never thought Israel this much powerful. India should think like Israel when it comes to fighting. We're all Indians. Jai Hind. Let's search by new. Okay. Another slap on clown Trump's face. I knew about Iran and Israel, but I did not know the date. Wait, a peace treaty will be signed. In the future, there will be India-China war as well. Something about a zero tax country, I don't know. How dirty you are, acid manure like brother. You keep taking his name all the time. You are a fool. India feared nation to even like Pakistan, not like Israel. We are even feared to attack Bangladesh. Huh? I don't know. I don't know. If the U.S. does not solve the Iran issue using Pakistan bases in 2 months, then the U.S. plans going to fail anyway because bad times are going to come for Pakistan after September. You know what I mean? Let's see how things turn out. Well, you know what I mean. What does he mean? What does he mean, you know what I mean? I don't know what he means. What does he mean? That's why you install air defense? Look how professional social media message it is. Putin sneezes? I have told you the Putin may get cold in future. If Putin sneezes, PD sir, I have told you that Putin may get cold in future. Israeli Operation Sindoor. That's why Munir has been invited to Washington. Center of gravity, Iran, Zindabad, with the crying emoji. Why do these Islamic extremists hate everybody and call themselves peaceful? It's a ploy. It's a trick. See, it's the way the extremisms work. It's to trick you into becoming sheep. All right, guys, that's the video. Link to this video will be in the description down below. Again,
it would have been very bad if Iran got nuclear weapons. So take that how you may. Take that how you may. I'll catch you on the next one. Yeah, this is gonna be talked about all summer long. This is not the end of it. I don't expect this to be anywhere near the end unless Israel is able to do something outrageous, and by that I mean like just completely take over. But we'll see. We'll see. All right, guys. Take care. Goodbye.